आपको कितना पैसा मिलना चाहिए हम बात करें इस वीडियो के अंदर। बेसिकली यार, अगर आपने अपनी कंट्री से मूव किया है टू यूके, यूएस, कनाडा, मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ लाइक दुबई, अबू धाबी, या फिर आप सऊदीया की बात कर लें, अगर आप वहाँ पे मूव कर रहे हो स्पेशली एज अ चार्ट अकाउंटेंट या एसीसीए या और कोई बंदा जो ऑडिट फर्म का एक्सपीरियंस लेके जा रहा है बाहर, कपल ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 3-4 साल का एक्सपीरियंस, बाहर जाना चाह रहा है, तो क्या पैसा मिलना चाहिए, राइट? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स बताने वाला हूँ एज एन एवरेज। बेसिकली कांट से कि यार किसको कितना मिलेगा, बट एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अलग अलग लोगों के साथ ऑन दीज मैटर्स या पॉडकास्ट सीरीज़ के अंदर, वो आप देख सकते हो। बट इस वीडियो में समराइज़ करते हैं पूरी पोजीशन को, जितनी भी मैंने आज तक वीडियोस बनाई हैं, बेस्ड ऑन द मनी, बेस्ड ऑन द सैलरी, कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो नंबर वन, लेट्स टॉक अबाउट यूके, क्योंकि मैं यहाँ पे भी हूँ और सबसे ज़्यादा वीडियोस मेरी इसी जगह की हैं। तो इन यूके अगर आप एक चार्ट अकाउंटेंट एसीसी जो भी हो, और एज ए सीनियर एसोसिएट इन सम फर्म्स, स्पेशली बिग फोर की बात करता हूँ क्योंकि मुझे उनके स्किल्स का काफ़ी अच्छे से पता भी हैं। तो अगर आप कुछ फर्म्स की बात करते हो, लेट्स से पीडब्ल्यूसी या आपका जो है ईवाई, दे डोंट हैव ए एम लेवल स्ट्रक्चर, सो ऑडिट की बात कर रहे हैं स्पेशली, सो आप सीनियर एसोसिएट पे आते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू केपीएमजी या डिलॉयट यूके, तो यहाँ पे एम की स्ट्रक्चर है, तो वो आपको टिपिकली M2 पे हायर करते हैं। इन एनी केस आपकी सैलरीज डिफर बाय सिटी। लंदन की सैलरीज हायर हैं ऑफ कोर्स, बाकी शहरों की कम है। लंदन में एज ए सीनियर, एज एन AM, जो भी डिफरेंट फर्म के मुताबिक आपको 45 टू 55 की सैलरी मिल सकती है। 40 से लेके आप 55 की रेंज कर सकते हो। 40 इज़ मिनिमम, मे बी 40 इज़ वेरी मिनिमम, लाइक कुछ फर्म्स दें, लेकिन 45 50 ऑन एवरेज। तो 55 56 आप एक एज ए स्टार्ट आप अटेंड कर सकते हो। 56,000 पाउंड्स की बात कर रहा हूँ, 55,000 पाउंड्स की बात कर रहा हूँ ऑन एनुअल बेसिस। जस्ट टू क्लैरिफाई, यहाँ पे एनुअल बेस में सैलरी कोड होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैनेजर लेवल थोड़ा सा। तो ऑफ कोर्स सैलरी 10-12-15 हज़ार बढ़ जाती है इन पाउंड्स ओवर द ईयर्स व्हेन यू गेट द मैनेजर। तो अगेन जस्ट टू कंसिडर दैट। अब बात करते हैं बाकी कंट्रीज़ की। लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सैलरीज अगेन, आप 3-4 साल के एक्सपीरियंस पे एक सीनियर एसोसिएट या असिस्टेंट मैनेजर ही मोस्टली जा रहे होगे, नॉट मैनेजर। एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए 80-85,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इज समथिंग यू शुड बी एक्सपेक्टिंग, मे बी मोर देन दैट बट नॉट लेस देन दैट। तो अगर आपको 85,000, 80 से 85,000 जो है डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आपको सैलरी नहीं मिल रही, किसी भी फर्म के अंदर कोई भी ऑफर नहीं है, तो दैट्स नॉट इनफ। आपको इतनी मिलनी चाहिए, दैट्स अ कॉम्पिटिटिव नंबर। अगेन AM लेवल, सीनियर एसोसिएट लेवल की बात कर रहे हैं, नॉट अबव और बियॉन्ड दैट। लेट्स टॉक अबाउट यूएस नाउ। यूएस की वीडियोस बनी हुई हैं मेरी अपनी, जो मैंने बनाई हैं कुछ लोगों के साथ, प्लेलिस्ट भी है यूएस की। तो यूएस में भी सैलरीज यूके से ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स यू वुड बी एक्सपेक्टिंग डिफरेंट सैलरी फॉर डिफरेंट सिटीज़। न्यूयॉर्क की काफ़ी ज़्यादा हैं, बाकी शहरों की कम है। तो प्रॉब्ली 80-90,000 डॉलर्स एज वेल, 90,000 अराउंड यू कैन गेट। ऑफ कोर्स टैक्स लगता है हर जगह पे जिसकी बात की है हमने अब तक, तो यू हैव टू पे टैक्सेस एज वेल। लेकिन गुड मनी अगेंस्ट यूके, यूएस के अंदर, एंड देयर इज़ अ विजिबल डिफरेंस इन दैट एज वेल। तो यूएस की बात कर ली, यूके की बात कर ली, ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई। अब बात करते हैं कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की, उसके बाद वापस मूव करेंगे इस तरफ, ठीक है। तो बात करते हैं दुबई की। दुबई में इट्स क्वाइट डिफरेंट कि आप किस लेवल पे जाते हो। फर्म्स जो हैं आपको यूजुअली एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट की लेवल पे हायर कर रही होती हैं। दे टिपिकली पे लाइक 13 to 14,000 और मे बी 15,000 एट मैक्स AEDs। अगर दुबई की बात कर रहे हैं, अबू धाबी की बात कर रहे हैं, तो आपको 13 से 15,000 AED, मे बी इवन स्टार्टिंग फ्रॉम 11 अगर आपका एक्सपीरियंस कम है। इट्स जस्ट अ रेंज। तो आपको इतना पे करेंगे पर मंथ। दुबई में टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स एटलीस्ट, तो आपको टैक्स नहीं पे करना, वो इज़ वेरी हैंडसम अमाउंट दुबई पर्सपेक्टिव, इवन कंसिडरिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे जो भी है। तो अगेन दिस रेंज कैन गो अबव 15, 16, 17। अगर कोई AM लेवल पे हायर हो रहा है दुबई की किसी भी फर्म के अंदर, स्पेशली द बिग फोर ऑफ कोर्स, तो 17-18 हज़ार, एंड मैनेजर जा रहा है तो नॉट AM, सॉरी, AM 17-18 से शुरू होता है, आगे भी जा सकता है मैनेजर अराउंड 20-22 प्रॉब्ली। तो और जैसे आप ग्रो करोगे, आई नो सीनियर मैनेजर्स, प्रॉब्ली सम ऑफ द सीनियर मैनेजर्स आई नो यूज टू गेट लाइक 35,000 AEDs per month plus. So yeah, there's a lot of money in Dubai. सेम कुछ फॉर अबू धाबी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दुबई की कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी हाई है, अबू धाबी की भी हाई है, लेकिन देयर इज अ स्मॉलर डिफरेंस इन द सैलरीज एज वेल।
उसके अलावा और जो लोकेशंस हैं वहाँ पे सैलरीज ऑफ कोर्स डिफर करेंगी मिडल ईस्ट में भी. सऊदी वाज क्वाइट क्वाइट गुड वन. आई रिमेंबर मुझे ऑफर थी बैक इन 2019 फ्रॉम KPMG Saudia. Was it KPMG? Yeah, it was KPMG. So I think they were paying quite handsome. जब मुझे सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस था, I was getting hired for an assistant manager, and they are paying quite handsome amount, like around 14,000 Saudi riyal at that time, 13 to 14,000 Saudi riyals per month. So now it must have changed. Still quite high, and of course the Middle East region is in growth phase right now, so you'll be expecting more growth opportunities. Definitely a lot of money over there. Of course, there's a trade-off of some stuff over there, but a lot of money, and those places are near to home as well. Things go not too differently. Let's talk about Bahrain, which is not so far from Saudi. So Bahrain doesn't really pay a lot of money, at least as compared to other locations. So they typically pay, and I was offered as well back in time in 2019, around 850 Bahrain dinars per month, which wasn't good enough considering other locations. I mean, it was compared to local currency, it was good enough, but it wasn't really good enough when we just see the bigger picture. So I just rejected the offer, but Bahrain used not to pay really good, and they have increased slightly, but not a lot, right? So not a good place from my perspective going over there. Let's talk about some other countries now. Malta in Europe. So I don't exactly remember the number right now, but they don't pay a lot of money. They pay less than some other European countries because they think that the cost of living is lower than other countries. And I was offered here as well in Malta. Malta में पैसा अच्छा नहीं था. I had to reject the job offer as well. I think उस time पे 2 years back, if you can work out the exchange rates and everything, उस टाइम पे मुझे PKR में अराउंड 3.5 लाख सैलरी बन रही थी. आई डोंट थिंक माल्टा हैज़ टैक्स, मे बी इट हैज़ मिनिमल टैक्स ऑफ 20%, मे बी आई एम रॉन्ग, बट उस टैक्स नेट ऑफ टैक्स इट वाज जस्ट लाइक 350,000 converted to PKR back in time, like 2019. It wasn't a lot when compared to other locations in the Europe as well. Talking about Ireland pays really well as against UK as well. So Ireland में पैसा अच्छा है, लोग काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं. ग्रेट करियर प्रोग्रेशन आफ्टर ब्रेक्जिट के बाद आयरलैंड हैज़ बीन वन ऑफ दोज हब्स. इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, वेल उनकी अपनी एक लैंग्वेज है लेकिन दे स्पीक इंग्लिश अ लॉट. तो वहाँ पे उनकी काफ़ी ग्रोथ हुई है, मार्केट काफ़ी ग्रो की है, और उसके हिसाब से आयरलैंड में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, पैसा एंड एवरीथिंग हैज़ ग्रोन रियली वेल. सो आयरलैंड के हिसाब से देयर इज़ अ डिटेल वीडियो ऑफ कोर्स वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम देयर. तो उसके साथ मैंने बनाई थी वीडियो, आप देख सकते हो. आयरलैंड पेज मोर देन UK. यू कैन चेक द वीडियो फॉर एग्जैक्ट नंबर एक्चुअली. other locations in Europe as well, like Luxembourg, pays really well. A lot of people have moved in recently. Luxembourg में और भी फ़ायदे थे, like salary wise, again you can find in my old videos. I don't want to give exact number because just go on those videos. You have the European playlist as well. But Luxembourg has other benefits as well, कि आपके public transport भी free है, and it's really nice country to be in there. तो वो भी आप एक फैक्टर है. उसके अलावा आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर्स फॉर जर्मनी और डेनमार्क. पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग वेरी रिसेंटली इन दीज कंट्रीज. पहले नहीं थे, तो उनकी सैलरीज शुड बी कॉम्पिटिटिव बिकॉज दे नीड पीपल, एंड यूरोपियन सैलरीज आर टिपिकली कॉम्पिटिटिव एज वेल. सो आप वो देख सकते हो. ऑप्शंस हैं आपके पास, करियर ऑप्शंस बेसिकली मूव करने के लिए. And then there are countries like Canada pays really well as well. आपको Canadian dollars just like competitive of US numbers you can quite get, and US numbers मैंने आपको पहले बता दी हैं कि कितने US के नंबर्स बन सकते हैं आपके लिए. अगेन मैंने कुछ कंट्रीज़ की बात की है, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग जाते हैं. मैंने ऑडिट फर्म्स के हिसाब से बात की है, बिकॉज ऑडिट फर्म्स आर दोस एरिया, द प्लेसेस वेयर वी एक्चुअली गो एटलीस्ट फॉर द ऑडिटर्स जिनको ईजिली मोबिलिटी चाहिए, तो दे जस्ट मूव टू ऑडिट फर्म्स. Industry pay quite a lot as compared to firms, क्योंकि of course they have the money and they want the employees from the firms as well. तो उनकी तरफ से पैसा ज़्यादा मिलता है, around 20-25% on average, quite high as against firms. But these are numbers for firms. Just to clarify,
फर्म जो ऑपरेट करती है द वे दे कोट इन यूरोपियन कंट्रीज और इन इंडस्ट्री यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज दे quote the salary per annum on gross basis on kind of annually thing, whereas the Middle Eastern countries talk about per month basis. Again, that's gross, doesn't net off the tax as well. So उस हिसाब से कोड होती हैं. I hope this gives you a brief snapshot of salaries around the world. Again, very relevant for those जो ACCAs, CAs और similar profession के अंदर हैं, those who have been in the firms for a while और अपना career देख रहे हैं वो उस चीज़ पे. I hope आपको पसंद आए ये वीडियो. पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना. दिस रियली हेल्प्स. थैंक यू सो मच.